Good morning students. So this is our second video on how to balance a complex chemical reaction. But yesterday we solved some very simple ones and today I am going to solve another difficult one. So first, number one step is check the equation. First we have to check whether the equation is already balanced or we have to balance it. So first I have taken the chemical reaction that is zinc plus sulfuric acid which gives zinc sulfate and hydrogen. So if I will see, the number of zinc is here 1 and here it is also 1. The number of hydrogen is here 2 and it is also here 2. Then the number of sulfur is 1, here it is 1, and number of oxygen is here 4, and in the right hand side it is also 4. So already the chemical reaction equation is balanced. So now we need not to balance it. The second example is given about rusting of iron, that is iron plus water which gives rust or ferric oxide plus hydrogen. This is, we have to check first it is balanced or unbalanced. So check Fe or iron, here it is 1, here it is 3. Hydrogen already here it is 2, here it is 2. Oxygen here it is 1 and here it is 4. So this is an unbalanced equation. So first we have to check that. First box them all. That means we cannot change anything inside these boxes because these are the chemical formulas of those compounds. So Fe plus H2O, Fe3O4 plus H2 all are present inside the boxes. Now choose the largest compound and it, the element having the highest number of atoms. In these four compounds or elements, ये जो चारिटा compound अच्छी इधर highest number of elements थिबा compound को हमें खोजिबा. For example जोटा है Fe3O4 एटे ये चारि ये तीन सातटी अच्छी आउ सबतरे कम अच्छी. So first we will take Fe3O4 and inside that आमे ताको भितर पुणी सेही element को बचबा जोतरे highest number of atoms अच्छी, that is oxygen which is having 4 atoms. So Fe3O4 and inside it O4. Now we will draw a box, simple box. Name of element LHS and RHS means this is the left hand side, this is the right hand side. So left hand side means the reactants and here the right hand side means the products. Oxygen in left hand side it is having 1, in right hand side it is 4. Then Fe or iron, here it is 1, here it is 3, and hydrogen here is 2, it is 2. So now first I will balance the number of oxygen. As oxygen here is 4 and here it is 1, so I will add a suffix 4 here. That here fast balancing करछि. एठी जेतु ऑक्सीजन चारोटी अछि तो मु एठी आगरे 4 लिखि. सो वर्तमान हैला Fe plus 4H2 Fe3O4 plus H2. नेक्स्ट सेकंड देखिबा Fe बा आमे देखि परिबा भी H2 को. ऑक्सीजन बैलेंस हे साला पर देखिबा कि जे 4H2 हे होछि माने एठी 8टा हे होछि 4 into 2 8. बट हियर एठी कोन थिला खाली H2 माने दुईटी थिला. तो जदि एठी दुईटी अछि आ एठी 8टी हे होछि ताले नेक्स्ट हम कोन करबा एठी 4 ऐड करियो 4 मल्टीप्लाई करबा कोएफिशिएंट रखिला. सो एठी रखिले सेकंड रे 4H2. सो एबे हमरो नेक्स्ट कहा को बैलेंस करबा Fe बा आयरन को बैलेंस करबा. आयरन को केमती एठी Fe थिला एठी Fe3 थिला माने एठी मोर तीनोटी Fe दरकार. So simply I will add 3 here or I will write 3 here. So now the equation is 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2. कौन पाई हमें सब करछथि कौन पाई बैलेंसिंग करछथि because every chemical reaction follows the law of conservation of mass. We have already studied in class 9 law of conservation कौन ना the mass never is created or nor it is destroyed. The mass of all the reactants will always be equal to the mass of all the products. So हमको यार mass पूरा पूरी completely equal रखिबार अछि. So now I have written here एठी chemical equation balance हे जे but to make it more informative एको टिके आहुरी बेटर करिया पे हमें कोन करबा ना तार physical state को हमें मेंशन करबा. Physical state गोटे कंपाउंड बा गोटे एलिमेंट रो तीन टाइप रो हे पारे गैस लिक्विड or it can be solid or also another one that is aqueous. Aqueous to mean ये water संगरे मिसी के dissolve है कि थिबा. So now here Fe पाखरे S लिखा है जे माने solid form रे अछि 4H2O. As we know that rusting पाई सबला आयरन को दुईटी जिंस दरकार. गोटे दरकार वाटर आ गोटे दरकार ऑक्सीजन.
आम तो ये वाटर प्लस ऑक्सीजन लिखी ना बट कौन हुए कि नॉर्मली जो आमर कौन लुहा जिनस अच्छी लाइक आम विंडोज आम झरकार लगी तो से तो कई बारंबार जाए पानी फिंगू ना तो से लुहाटा केमती कौन खाऊँ ना आटमोस्फियर जो वाटर भेपर अच्छे स्टीम हिसाब से अच्छी वाटर भेपर हिसाब से अच्छी जलीय बाष्प हिसाब से अच्छी से सागर मिसिकी ही रस्टिंग करे सो आम जो H2O को मेंशन कर ये गैस फॉर्म रे अच्छे नेक्स्ट Fe3O4 जोटा तैयारी हुए जोटा को रस्ट बा कल कि कौ सी था सॉलिड फॉर्म रे एंड 4H2 बा हाइड्रोजन गैस सी अच्छी गैस फॉर्म रे बही रे ऑलरेडी किसी एग्जांपल्स देछि जो थे कि ए एरो मार्क ऊपर किसी नंबर लिखाई थो फॉर एग्जांपल लिखाई थो 340 atm atm मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर बा जदि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन देखिबा सेठी लिखाई थो सनलाइट तळे लिखाई थो क्लोरोफिल ता माने कौन पाई एठी लिखा होची जब गोटे रिएक्शन होची खाली खालीटारे रिएक्शन बेले बेले हुए ना बेले बेले ताको किसी प्रेशर देवा को पड़े बेले बेले किसी टेम्परेचर दरकार एति टेम्परेचर रे ए रिएक्शन हो पारिबो से टेम्परेचर तळକୁ गले हो पारिबोनी बा किसी कैटलिस्ट दरकार कैटलिस्ट माने समवन हु इंक्रीजेस द रेट ऑफ ए रिएक्शन गोटे रिएक्शन आमर हो ना तार स्पीड को टिके इंक्रीज करने आम किसी कैटलिस्ट यूज कर पर देखा सो ये सब को आम यूज कर कौटी मेंशन करबे ना नियर द एरो मार्क आइदर एरो मार्क ऊपर लिखिपर ना एरो मार्क तले लिखिपर सो in this way we can balance the chemical reaction. Next you have to solve some questions that is given in the book. Question in page number 6 maybe yes 6 रे जो क्वेश्चन देछि ताको सॉल्व करे चेष्टा करबा और नेक्स्ट या तो भी किछि डिफिकल्ट केमिकल रिएक्शंस को सॉल्व करबा को भी चेष्टा कर. So this is all about how to balance a chemical reaction.